Hello everyone, very warm welcome you all to my new case-based learning series. So today we are starting with case number 5. Myself Dr. Himangi Kothari, MD Pediatrics. So today we are starting with a new case. Case goes like 4-month-old male baby came to my hospital with complaints of severe breathing difficulty and weight of child is 4.8 kg below third centile. So complaint of the parents is poor feeding for 2 months, excessive sweating on the forehead during feeds for 1.5 months, fast breathing for 1 month and failure to gain weight since birth. So this is complaints like poor feeding, excessive sweating, fast breathing and failure to gain weight. But there is no complaint of fever. Baby was apparently well until 1.5 month of age when the mother noticed excessive sweating over the forehead and scalp area during feeds and associated with fast breathing and difficulty completing feeds. So feeding complaint है. Feeding time became prolonged and tiring for the infant. Over the past month, child has developed breathing difficulty even at rest. पहले जब फीडिंग कराते थे तब ब्रीदिंग डिफिकल्टी था और पास्ट मंथ से ब्रीदिंग डिफिकल्टी इवन एट रेस्ट भी है. तो दिस सिम्टम्स आर CCF सिम्टम एंड मिनिमल वेट गेन वॉज नोटेड. सो इन चाइल्ड कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर का सिम्टम है एक्सेसिव स्वेटिंग, क्योंकि उसको एक ही काम है फीडिंग करना, मतलब कि फीडिंग लेना. तो उसके एक एक्सरसाइज के काम में जब बच्चा एक्सरसाइज करता है, फीडिंग लेता है, तब उसको एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है, फास्ट ब्रीथिंग होता है. तो फीडिंग डिफिकल्टी, एक्सेसिव स्वेटिंग, fast breathing and minimal weight gain was noted. There is no history of fever, vomiting or cyanosis. अगर रेस्पिरेटरी कंप्लेन है या फिर साइनोटिक CHD है तो उधर साइनोसिस आपको मिलेगा. मदर टिपिकल बोलेगी कि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ लिप्स और कंजक्टाइवा ऐसा हो जाता है, बट देर इज नो ब्लूइश डिस्कलरेशन इज नोटेड इन दिस चाइल्ड. सो वी आर आस्किंग डेवलपमेंटल एंड फीडिंग हिस्ट्री, इज देयर अ डेवलपमेंटल डिले और नॉट. सो दिस इज डेवलपमेंटली appropriate for age. Exclusively breastfed child, feeding time is more than 30 minutes and fatigues quickly. तो उसमें सक रेस्ट सक साइकिल होता है, मतलब कि बच्चा सक करता है, फिर रेस्ट करता है, फिर से सक करता है, तो वो बीच बीच में भी थक जाता है. तो सक रेस्ट सक साइकिल इज प्रेजेंट हियर. So what is antenatal, natal and postnatal history? Baby is full term normal vaginally delivered. Birth weight is 3.2 kg. So normal birth weight and normal any ANC, PNC and birth history is absolutely normal. No antenatal infection, maternal infection or drug intake during pregnancy. No NICU stay is required for this baby. What is family history? This is non-consensuous marriage. There is no family history of congenital heart disease or syndromic features. तो ये केस आपको कौन सी सिस्टम में लग रहा है? RS है कि CVS है, या फिर एब्डोमिनल है कि फिर CNS है? CNS तो नहीं है, CNS के कोई फीचर्स नहीं है, एब्डोमिनल भी नहीं है. RS और CVS में से कौन सा है? तो अगर न्यूमोनिया होगा तो उसको फीवर आएगा फास्ट ब्रीथिंग के साथ, लेकिन इधर न्यूमोनिया जैसा भी नहीं है. देर इज नो फीवर, देर इज नो साइनोसिस, देर इज नो एनी कफ कोल्ड फीचर्स. सो दिस इज केस ऑफ CVS up to this history. Okay, now we are doing examination. What is general physical examination findings? So anthropometry, weight of this child is 4.8 kg, Z score is -3 ST, मतलब ये सेम चाइल्ड है, FTT चाइल्ड है, फेलियर टू थ्राइव प्रेजेंट है, लेंथ इज 58 सेंटीमीटर, FTT चाइल्ड है, length is 58 centimeter, vitals afebrile, there is tachycardia and tachypnea, heart rate 158 है और respiratory rate 64 है, SpO2 97% है. तो SpO2 97% है और साइनोसिस भी नहीं है, तो ये साइनोटिक CHD हमने रूल आउट कर दिया. तो ये एसाइनोटिक CHD लग रहा है, एसाइनोटिक CHD अभी तक के एग्जामिनेशन में. टेकिकार्डिया एंड टेकिपनिया बोथ है. देर इज नो साइनोसिस, नो क्लबिंग एंड नॉर्मल हेड टू टो एग्जामिनेशन. सिस्टमिक एग्जामिनेशन में क्या है? तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, प्रीकोडियल बल्ज, देर इज बल्ज ओवर द प्रीकोडियम, हाइपर डायनेमिक प्रीकोडियम, अपेक्स बिट उसका डिस्प्लेस्ड है टू फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, लेटरल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन. थ्रिल इज प्रेजेंट, अगर हमने ऐसे हाथ रखा तो थ्रिल प्रेजेंट है लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर पे. ग्रेड 3/6 मतलब लाउड पान सिस्टोलिक मर्मर एट लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर पे है, लाउड S2 इज प्रेजेंट. सो देर इज वॉल्यूम ओवरलोड है, देर इज फीचर्स ऑफ वॉल्यूम ओवरलोड. हाइपर डायनेमिक प्रिकोडियम तो वो वॉल्यूम ओवरलोड सजेस्ट करता है. और देर इज पान सिस्टोलिक मर्मर, थ्रिल इज प्रेजेंट, लाउड S2, ग्रेड 3/6 मर्मर. सो दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स. रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन, सबकोस्टल रिट्रैक्शन प्रेजेंट एट रेस्ट, मतलब कि उसका कुछ अभी रो नहीं रहा है, कुछ नहीं, सबकोस्टल रिट्रैक्शन प्रेजेंट है. रेस्पिरेटरी रेट 64 per minute है, मतलब टेकिपनिया है. बायलेटरल बेसल क्रेपिटेशन प्रेजेंट. सो दिस इज इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी फाइंडिंग्स. Abdominal, liver is palpable 3 cm below right costal margin, soft and tender on palpation. So there is important finding in per abdomen examination, that is liver is palpable 3 cm below. There is no splenomegaly. Child is alert, active and normal tone with normal reflexes. So CNS is normal here. So what is clinical diagnosis by history and examination? So this is
looking like clinical diagnosis, so we have to confirm by X-ray and 2D echo further. But this is acyanotic CHD with left to right shunt. How can we say left to right shunt? So these features are all, there is no cyanosis, but there is volume overload. So this is left to right shunt with pulmonary overcirculation with CCF features. So this is clinical diagnosis in same child or FTT child. Here FTT child. Differential diagnosis VSD most likely in this case, because this is pansystolic murmur, precordial bulge and CCF features are present. So this is moderate to large VSD, we can say moderate to large VSD because there is CCF symptom. Small VSD होता है तो 4 month पे उसका ये CCF नहीं होता है. Moderate to large VSD है तो chances of CCF present. ASD usually presents later age, not 4 month of age. मर्मर इज इजेक्शन सिस्टोलिक है और फिक्स्ड स्प्लिट S2 प्रेजेंट होता है. पीडीए में तो कंटिन्यूस मर्मर आता है एट लेफ्ट इंफ्राक्लेविकुलर एरिया. ABSD कॉमन इन डाउन सिंड्रोम, मतलब सिंड्रोमिक चाइल्ड में हैव कंबाइंड ASD एंड BSD फीचर्स. तो ये हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन देख के हमें BSD ज़्यादा लग रहा है. अभी हम व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशन वी शुड डू? दो एक्सरे, ECG एंड 2D echo. दिस बेसिक इन्वेस्टिगेशन वी मस्ट डू. So what will be the X-ray findings? Can anyone tell? So X-ray of this baby, there is cardiomegaly. CT ratio is prolonged. So what is CT ratio? This is cardio-thoracic ratio. CT ratio, cardio-thoracic ratio is prolonged, is more than 0.5. So there is cardiomegaly present and pulmonary plethora. Can you see here? This is increased pulmonary vasculature. This is pulmonary plethora. So increased LALV, enlarged in size, pulmonary arteries also enlarged, and right-sided chamber will be normal in size in initial phase, and then biventricular hypertrophy can be seen. So ECG finding, sinus tachycardia, that is heart rate of 158 per minute. There is sinus tachycardia. This is left axis deviation and biventricular hypertrophy can be seen. So what is 2D echo finding in case of this patient? So this is apical 4-chamber view. That is, this is इन 2D को हमें उल्टा ऐसे ये व्यू में उल्टा दिखता है. तो दिस RA RB LA LB, तो RA RB LA LB ये हमें देखना है. तो नॉर्मल व्यू क्या है? दिस इज RA, दिस इज RB, दिस इज LA, दिस इज LB, दिस इज एट्रियल सेप्टम एंड दिस इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. तो ये नॉर्मल व्यू है. और VSD में क्या होगा? तो दिस इज RA, दिस इज LA RB LB. तो इधर इंटरएट्रियल सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, तो दिस इज होल. सो दिस इज VSD. तो LV से ब्लड पूरा RB में जाएगा. सो दिस इज VSD इन 2D echo. So 2D echo is a diagnostic investigation. It will show the size, site and shunt of the defect, and it will indicate about coexisting abnormality also. So now we are learning about ventricular septal defect. Important points. So VSD is most common congenital heart disease overall. It comprises 25% of all congenital heart diseases. It is also most common congenital heart disease in infant of diabetic mother. तो IDM वाले बच्चों में most common congenital heart disease कौन सा होता है? VSD. So this is VSD, deoxygenated blood from the body. ये RA में आता है और फिर ट्राइकस्पिड वाल RV में जाता है और इधर से पल्मोनरी ट्रंक से लंग्स में जाता है. ब्लड फ्रॉम लंग्स LA में आता है, LV में आता है और एओटा से बॉडी में जाता है. तो इधर VSD है तो LV का प्रेशर ज़्यादा होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में शंट होगा. LV to RV, लेफ्ट टू राइट शंट. So this is handmade diagram. From SVC and IVC, all blood come into RA and then RV. पल्मोनरी वेन से LA में और LV में आता है ब्लड, और इधर से पल्मोनरी ट्रंक एंड इधर से एओटा में जाता है. देयर इज VSD, ventricular septal defect. So blood goes from LV to RV. There is left to right shunt here. So we are learning about the pressure during systole and diastole. So in LV, during systole there is pressure is 100, and in RV during systole pressure is 20, and during diastole in LV this pressure is 12, and in RV diastole pressure is 8. So here pressure gradient during systole, there is systole 80, and during diastole this is प्रेशर ग्रेडियंट इज 4. अगर मोर देन 12 है प्रेशर ग्रेडियंट तो ही मर्मर आएगा, तो सिस्टोल में आएगा, डायस्टोल में मर्मर नहीं आएगा. सो 2 इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट फॉर शंट सिवियरिटी. तो साइज ऑफ VSD एंड पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस. साइज इंपॉर्टेंट है और PVR कितना पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड है शंट. तो नॉर्मल सर्कुलेशन क्या होता है? LV से एओटा में जाता है, RV से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है नॉर्मल सर्कुलेशन. तो VSD के अंदर क्या होता है? लेफ्ट टू राइट शंट इनिशियली. तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा प्रेशर है, हाई प्रेशर, तो RV में जाएगा ब्लड.
If the left ventricle has a pressure of 100 by 12 and the right ventricle has 20 by 8, so pressure gradient in systole would be 80 and the pressure gradient in diastole would be 4. So there will be significant movement of blood moving from left side to the right side, and there is left to right shunt here. So more amount of blood will go in systole compared to diastole because the pressure gradient is more in the systole, and there will be hollow systolic, pan-systolic murmur, and it will begin with the first heart sound and end with the second heart sound. तो first heart sound से second heart sound पूरे systole में murmur सुनाई देता है, तो that is called pan-systolic murmur. There is continuous murmur throughout the systole. So there is extra blood goes from LV to RV, then it goes to pulmonary system, and the pulmonary system overloaded. Eventually some amount of blood started reaching LA and then LV. तो इधर पहले तो ब्लड LV में से RV में जाता है, पल्मोनरी सिस्टम ओवरलोडेड हो जाता है, फिर उधर से लंग्स में से LA एंड LV में भी आ जाता है. वॉल्यूम ओवरलोड ऑफ RV डज नॉट हैपन हियर. सो इधर से संट हुआ, LA LV, LV से RV गया और RV से लंग में गया, और पूरा ब्लड वापस आएगा इधर LA में और LV में. तो इवेंचुअली LV में से RV में गया और RV से लंग और LA LV में आएगा. तो इधर लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मतलब लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल का हाइपरट्रोफी होगा. There will be significant blood passing through the mitral valve. ये mitral valve से significant blood pass होगा. So there will be mid diastolic murmur may be present in the patient. A mid diastolic murmur in VSD indicates a severe form of VSD. So to summarize, increase pulmonary blood flow and increase there is pulmonary overcirculation, and blood returns to the left atrium and increase LV preload and then increase in LV volume overload. So eventually there is LV volume overload होगा. Left axis deviation, left side का hypertrophy होगा. Hemodynamically, two types of VSD can be defined. There is small VSD less than 5 mm, also called pressure restrictive VSD. In small VSD, pressure is restricted by the pressure gradient between the two chambers. And there is large VSD. It is more than 1 cm, more than 10 mm. So it is called non-restrictive VSD. There is unrestricted movement from LV to RV. There will be depend on PVR, pulmonary vascular resistance. In large VSD, the shunt will depend on PVR SVR ratio. If the PVR, pulmonary vascular resistance, is high, the shunt will be non-significant. If PVR is high, the shunt will be non-significant. So what are the types of VSD? There is type 1, type 2, type 3 and type 4. You can see here type 1, 2, 3, 4. So type 1 is 5 to 7% of isolated VSD. It is called infundibular, supracrystal and subpulmonary. जो इधर है, you can see here, supracrystal, subpulmonary. जो pulmonary trunk है उसके नीचे ही है, इसके नीचे. तो ये सब पल्मोनरी, इन्फंडिबुलर और सुप्राक्रिस्टल टाइप है VSD का. टाइप 2, दिस इज टाइप 2. टाइप 2 इज पेरीमेम्ब्रेनस. दिस इज मोस्ट कॉमन 70% ऑफ द VSD पैरामेम्ब्रेनस ऑन कोनोवेंट्रिकुलर VSD. टाइप 3 इधर आता है. तो 5% ऑफ द VSD टिपिकली अकर्स इन डाउन सिंड्रोम, पेरी इनलेट, एवी कैनाल, एवी सेप्टल और एंडोकार्डियन कुशन. टाइप 4 is cushion, 20% of VSD and muscular VSD. So now we see in detail. So this is supracrystal, perimembranous and this muscular. So these three types is very important. Ventricular septum has two parts, small membranous part and large muscular part. So large muscular part has three divisions: inlet, muscular trabecular part and then outlet. So types of VSD, membranous is most common, overall most common, 50 to 70% is case is membranous VSD. It is present in posterior inferior part of the interventricular septum, but it is present anterior to the septal leaflet of the tricuspid valve. 35% chance के spontaneously close हो जाएगा. So membranous VSD है 50 to 70% most common है ये, और 35% cases में वो spontaneously close हो जाता है. Now muscular VSD, it is 5 to 20% of the cases and many muscular VSDs close spontaneously by 4 year of age. 4 year age में spontaneously close हो जाता है. It has a maximum tendency to close spontaneously. So muscular VSD में 80% chance है कि वो spontaneously close हो जाएगा. Swiss cheese VSD, muscular VSD का ही part है. Swiss cheese VSD, muscular VSD is a small perforation. They are difficult to manage. They have high incidence of CCF and they are difficult to surgically operate. Swiss cheese VSD does not close spontaneously and fortunately they are very rare. मतलब कि Swiss cheese मतलब इसमें ऐसे बहुत सारे perforation holes होते हैं. Swiss cheese VSD, that is type of muscular VSD. Now supracrystal VSD, also called outlet VSD. It is rare and severe form and it is most common in Asian population. It is a strong association with aortic regurgitation and aortic valve prolapse. AVP and AR are most common in supracrystal VSD, which is why it is very difficult to manage and it is superior to crista supraventricularis. And supracrystal VSD में strong association with AR and AVP. So what is clinical symptom of VSD? स्मॉल VSD होता है वो एसिम्टोमेटिक और सॉफ्ट मर्मर आता है. मॉडरेट टू लार्ज VSD में दिस सिम्टम्स ऑफ CCF, poor weight gain, tachypnea at rest, pan-systolic murmur and feeding difficulty. So these are symptoms of VSD.
Complication of VSD, तो most common is infective endocarditis. Is most common complication. This is then eventually development of pulmonary hypertension which can lead to Eisenmenger syndrome. तो initially left to right shunt होता है, फिर pulmonary hypertension हो जाता है, तो बहुत सालों के बाद right to left Eisenmenger syndrome develop होता है. तो in this syndrome left to right shunt reverses and become right to left, and cyanosis appears in previously acyanotic disease. There is chance of recurrent infection due to pulmonary overcirculation. So in this child, pneumonia are most common recurrent infection. Aortic regurgitation is seen in supracrystal VSD. So this complication, acquired infundibular PS. So there is acquired infundibular PS is also complication of VSD. So the sign of cyanotic CHD is come when PS is developed. Medical management to infective endocarditis prophylaxis. CCF management started with low dose management of diuretic, that is Lasix, furosemide, and then digoxin usually avoided. Nutritional management, because this child mostly failure to thrive and same child. Indication of surgical management of VSD. Any supracrystal VSD of any size at any age needs to be closed, because supracrystal VSD is associated with what? AR and AVP. So this is very dangerous. Supracrystal VSD needs to be operated as soon as possible. Failure of medical management in children of any age with CCF symptom, failure to thrive, surgery must be done within 6 months of age. तो ये child surgery अगर हम medical management करेंगे और वो fail हो जाएगा तो it's indication for surgical management. Ideally surgery should be operated by 3 to 4 months. तो 3 to 4 months में उसका operation हो जाना चाहिए अगर CCF है तो. A child aged between 6 to 12 months with pulmonary hypertension needs to be operated even if no symptoms are seen. So this is important. If pulmonary hypertension is present in 6 to 12 months of age, this needs to be operated. A child more than 2 years of age with QPQS pulmonary and systemic blood ratio is more than 2:1 needs to be operated. Any child associated with AR or PS will also need surgery irrespective of the symptoms. So these are the indication for surgery in case of VSD, ventricular septal defect. So this is all about ventricular septal defect. Hope it helped you. Thank you.